get enriched ourselves with our Indian culture in this evening through this program of Amritam Gamaya. And we are moving from mortality to immortality, and invincibleness and intangible cultural heritage of the country are depicted today. There are several programs, they have been lined up today, starting from Carnatic and Hindustani music, folk dances of West Bengal, excerpts from the Rukmini Devi production featuring 42 artists from Kalakshetra Foundation, and there are dance performances from Uttarakhand and Kashmiri music and percussions, Tal India and flamenco and Tanora. So these are the 8 programs they have been lined up today. I am sure that you will have an excellent evening, an amazing evening today. And with this, I welcome our chief guest of today's evening, Honorable Chief Minister of Uttarakhand. Please give them a big round of applause. I would also like to welcome our Honorable Culture Minister, who is the backbone behind this program, Azadi Ka Amrit Mahotsav. And since I am looking after this Azadi Ka Amrit Mahotsav, I'll just give you 2 lines. This Azadi Ka Amrit Mahotsav, in this we are commemorating 75 years of Indian independence. Why we are commemorating? We are commemorating the patriotic sacrifices done by our heroes, and we want to remember the places who have got historical importance in our Indian heritage, and also we are trying to remember, and we are having a connecting link between the past, present and the future through all these programs. This is one such endeavor, and in this endeavor lots of pains have been taken, and this has been, and our Revati Madam from Kalakshetra Foundation and Banyan Tree Mahesh, they are working relentlessly for the last 3 months, I think. They are running between pillar to post, and they have come to the ministry. We have done lot of brainstorming how it has to be done. And finally, we have come up with this concept of Amritam Gamaya, wherein the different forms of music, dance, they have been collated physically, intellectually and emotionally, and bringing various forms of tribal, folk, classical, semi-classical dance forms and the music. And this amalgamation with international art forms is in a well-curated form, is going to be depicted today. So, and this is going to be great, very exciting. I'm looking forward for it. And we had earlier 2 events, such events that have happened. One started on 29th at Ahmedabad, where the response is humongous. And second program we had in Bangalore, and this is the 3rd of its series. And we are, looking at the success of these programs, we have taken a decision to continue this, calling the international artists, national artists, and I am so thankful to our HCM Shri Kishan Reddy sir. He is such a force behind us and such a positive inspiration. And today I was telling Anish, I don't know sir को कहाँ इतना energy मिलती है. हम लोग थक जा रहे हैं, सर थकते नहीं है. Starting from morning 6 o'clock onwards till 12 o'clock, 1 o'clock, he keeps working, he keeps calling, he keeps motivating us for doing this job. And with us, with his intervention only, we are able to do more than 60,000 programs under Azadi Ka Amrit Mahotsav. This is one of the greatest achievements in any country's history. And this is going to be in the Guinness Book of World Records very soon. And this is one of the biggest ever commemorations any country in the world has ever taken up. So in this event, I request all my young children sitting over there, you should take up the Har Ghar Tiranga program. And I hope you must be aware of this program, Har Ghar Tiranga, and your teachers, your principal, looking at them, I could imagine that they must have motivated you very well for this. बच्चे लोग, आपसे अनुरोध है, आप लोग सब अपने घर में 13 से 15 तक झंडा जरूर फहराइए. आप फहराइए. ये फहराने का मकसद है, हमारे अंदर जो पेट्रियाटिक भावना है, उसको जगा नहीं है. इसको कहते हुए once again I welcome you all for this great evening. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. May I now request our Honorable Cultural Minister, Shri Kishan Reddy, to please come on to the dais.
very briefly about Kishan Reddy. Shri G. Kishan Reddy hails from Telangana. He holds a degree in tool design from CITD. He started his career as a youth leader of the Janata Party in the year 1977 and is now serving as a Minister of Culture, Tourism and Development of the northeastern part of India. We are indeed very happy to have him grace our occasion today. Thank you, Akka. May I now request Honorable Culture Minister to please say a few words on the occasion. सबको नमस्कार। नमस्कार everyone. I am happy to be present among all of today. It is my privilege to visit one of the oldest schools for girls in India. Let us just now, Government of India Joint Secretary Srimati Uma Nanduri ji just now told, Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritangamaya, Om Shanti Shanti Shanti. Respected Sri Pushkar Damiji, Honorable Chief Minister, Uttarakhand, Uma Nanduri ji, Joint Secretary, Culture, Government of India, Anisha Ranjan ji, Direct Academies, Revati Ramachandran, Madam, Director Kalakshetra, Sri Khannaji, Principal of Welfare Girls School, Vibhakana. Just now I told, Om Asatoma Sadgamaya, meaning let us from the unreal to the real. Lead us from darkness to light, अंधेरा से उजाला. जो आज अलग अलग विषय पर लोग अलग अलग समझते हैं, मगर उनको जो उजाले की ओर ले जाना, let us from death to immorality. हम आज सबके हित के लिए सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के मानव कल्याण के लिए हम बात करते हैं. इसलिए ओम शांति शांति शांति, सर्वे जनो सुखिनो भवन्तु. Friends, these lines represent our vast set of cultures and a 5,000 years old civilization which has influenced the entire world. Today, as a part of Azad Ka Amrit Mahotsav, which is an initiative, Government of India under leadership of the Prime Minister Narendra Modi ji, to celebrate and commemorate 75 years of India independence. The Kalakshetra Foundation
is presenting Amritam Gamaya. This is the international festival of performing arts. Will bring a live Indian culture and instill pride of our rich heritage. The festival will celebrate the immoral, the invisible and intangible heritage of India, Bharat. Amritam Gamaya echoes the spirit of Azad Ki Amrit Mahotsav by creating a movement that connects the different parts of India, spreads awareness among the youth, and cherishes Indian culture and traditional at all forms. Under the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, under his reasonable leadership, India celebrating 75 India's Independence Day celebrations through Azad Ka Amrit Mahotsav. Prime Minister Narendra Modi ji vision in 2047, Bharat going to celebrate 100 years Independence Day celebration. That's why our country builds a vision for its next 25 years of youth should be the flag bearers of the progress and prosperity. Friends, Azad Ka Amrit Mahotsav now as India enters Amrit Kal. We believe India youth is our greatest strength. Today our young minds are excelling in different sectors of contributing to national progress. Our government under leadership of Narendra Modi ji has been enabling the youth achieve their dreams and fulfill their potential. We are strengthening our youth power, Yuva Shakti, to prepare them for their crucial role building Atmanirbhar Bharat to our dreams. 2047, my nation going to celebrate 100 years independence celebrations. That time, Bharat should become a Vishwa Guru. That should be 130 crore Indians agenda. Friends, few initiatives since 2047, the India going to celebrate. That's why we should everybody start planning for 100-year Indian celebrations. That is not only celebration. That is going to be India Vishwa Guru. Everybody knows 2014 have been undertaken the youth development, their new education policy. 2020 after four decades, India got new education policy. Created 100 unicorns. 1,000 Kelo India centers are being set up. Everybody knows the number of medals that we been winning various international sporting events such as the Olympics and the Commonwealth Games is a testimony to youth of India under the focus of this sports also. 1.3 crore youth trained under Prime Minister Kaushal Vikas Yojana. One of the new IIT and IIM opened every year since 2014. One new university in every week since 2014, Government of India opening in India. 2 new colleges every day since 2014 and much more. My dear friends, our pride, our Prime Minister, Honorable Prime Narendra Modi ji believe the youth and especially the young girls and boys, women in this country, true flag bearers of India. By empowering our girl child and the women of our country, we can achieve
social transformation. In this background, Government of India changed the attitude, thinking of people for girl child. That's why we started Beti Bachao, Beti Padhao. You all are crucial of India's growth. The days of women development has been replaced by women-led development. In fact, each of every girl and young woman are in the national builder. This is the result of shifting our focus from women development to women-led development. India going to paradigm change in this angle. Women are the integral and the equal part of Indian history and our long culture. In our culture, we say our God, goddess, Parvati Parameshwara. We should not say, we will not say Parameshwara Parvati. We are saying Parvati Parameshwara. We say Sita Rama, Ramudu Sita, we should not say. Lakshmi Narasimha, we call our country Bharata Mata. We will not call Bharata Pita. That is our greatness of in the sector as women. Rights from our ancient epics to Indian struggle for independence to being the fastest growing economy of the world, women have played very strong and decisive role in shaping narratives across the capacities. Recently, India's success in Commonwealth Games, our girls have achieved number of medals out of the girl force succeed the get India Commonwealth medals. Today, in India aims to be a major global economical power. The need of women's participation in the nation growth story is becoming a crucial day by day. Today we have a tribal women president, women sarpanchas, the largest number of women representatives in Narendra Modi cabinet and a large number of MLAs, MPs, women from women. Research has shown that the role of women in public service and outcomes the social welfare programs, they multiply with the women participation. I want to say that we cannot achieve success if 50% of our population being women are not able to meet their aspirations. We have to nurture women enterprises through financial support, skill and training and other encouragements. In a nation which considers earth is mother, the progress of women will ensure and strengthen India's development. Friends, between August 13th to 14th August, we will celebrate Har Ghar Tiranga campaign. I request the Welhome School and all you bright young future of India to participate in the event of host national flag in respected areas. I would like to thank the Kalakshetra Foundation, the Ministry of Culture for giving me opportunity to interact with all these young women and elders and sisters and brothers. I wish you all the best for your future endeavor. I like to end with a few lines of Swami Vivekananda. India must conquer the world and nothing less than that is my ideal. It may be very big, it may be astonish many of you, but it is so. To Nari Shakti to Yuva Shakti, Nation Shakti to Nari Shakti, the women power, the youth power, the nation's power. Bharat Mata ki Jai, Jai Hind, Vande Mataram. Thank you very much, sir. We are indeed honored by your presence and your words of motivation. Thank you very much.
We are indeed very happy to have in our presence Srimati Kavya Reddy, spouse of our Minister, Shri Kishan Reddy. May I please request her to come on to the dais. Thank you very much. Very briefly about our next dignitary, Shri Pushkar Singh Dhami. Shri Pushkar Singh Dhami hails from Kumaoni, Hindu Rajput families of the Pithogarh district. He holds a degree in Human Resource Management and Industrial Relations. He started his career as an active Indian politician and is now serving as the Honorable Chief Minister of Uttarakhand. We are very happy to have such an illustrious person in our midst. May I request our Honorable Cultural Minister, Kishan Reddy, to please felicitate our guest. Still. May I now request Honorable Chief Minister Shri Pushkar Singh Dhami to address the gathering. भारत माता की, भारत माता की। आजादी के अमृत महोत्सव पर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में कला क्षेत्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित अमृतम गमया कार्यक्रम में अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय जिनके निर्देशन में पूरा आज़ादी का अमृत महोत्सव, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर 60,000 से भी ज़्यादा, जैसा उमा जी ने बताया 60,000 से भी ज़्यादा कार्यक्रम पूरे देश के अंदर आयोजित किए गए हैं। उसके पूरे सभी कार्यक्रमों का, पूरे देश भर के कार्यक्रमों का कोऑर्डिनेशन करने का काम, उनका संयोजन करने का काम करने वाले, और मैं सच कहूँ तो बहुत बचपन से ही आदरणीय रेड्डी जी और उनके साथ मुझे काम करने का अवसर प्रदान हुआ। हम लोग बीजेपी यूथ में एक साथ काम करते थे। अब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जी, मैं यहाँ का काम देखता था। आदरणीय किशन रेड्डी जी और उनकी श्रीमती आदरणीय काव्या रेड्डी जी, संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार उमा नंदूरी जी, अनीश राजन जी, रेवती रमन चंद्रन, निदेशक कला क्षेत्र फाउंडेशन, जिनके तत्वाधान में सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और इस देहरादून कहूँ, मैं उत्तराखंड कहूँ, इस क्षेत्र के पूरे हमारे प्रदेश में माने जाने विद्यालयों में से एक जो वेलम गर्ल्स हैं, उसकी प्रधानाचार्य विभा कपूर जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी और उनकी श्रीमती जी,
शायद मीनाक्षी जी को आज इसलिए यहाँ आमंत्रित किया गया हो कि कला क्षेत्र फाउंडेशन का सीधा सीधा संबंध हमारे वहाँ तमिलनाडु चेन्नई से है। तो श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, सचिव हमारे यहाँ के उत्तराखंड के श्री हरीश चंद्र सेमवाल जी, हमारी डायरेक्टर संस्कृति विभाग बीना भट्ट जी, एवं इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, हमारे पूज्य संतगण, सभी उपस्थित हमारी माताएं बहनें और जिनके निमित्त मैं देख रहा हूँ कि जो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव जहाँ अभी हम लोग मना रहे हैं, वहीं हम इसके बाद ठीक आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश करने वाले हैं। और 25 साल का अमृत काल, जिन नौनिहालों और जिन हमारे आने वाले जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारी सभी बैठी हुई पीछे बहनें, सभी जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, इस विद्यालय की सभी छात्राएं, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी सभी अधिकारीगण, उपस्थित देश विदेश के सभी कला प्रेमी, पत्रकार एवं छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से आदरणीय रेड्डी जी का बहुत स्वागत करता हूँ। देवभूमि आगमन पर आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आज आपने प्रातःकाल यहाँ पहुँचकर सबसे पहले भगवान केदारनाथ जी के दर्शन किए और बाबा केदार उन्हीं को बुलाते हैं। भाई साहब आदरणीय रेड्डी जी ने कहूँ तो बाबा केदार उन्हीं को बुलाते हैं जो सच में केदार बाबा के भक्त होते हैं। अन्यथा क्या है कि यहाँ बहुत लोग सोचते रहते हैं मैं दर्शन करने जाऊंगा, मैं केदार बाबा जाऊंगा, मैं बद्री विशाल जाऊंगा, मैं अन्य देव स्थानों पर जाऊंगा, लेकिन मौका मिलता ही नहीं है। होता क्या है कि हम सोचते रहते हैं, आप लोगों ने भी, सब लोगों ने, इतने लोग इतने सभागार में बैठे हैं, सब आप सोचते रहते होंगे कई बार कि हमको जाना है, और सोचते 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 भी हम जा नहीं पाते। अगर आप सब सोचेंगे तो आप अपने अपने जीवन की सब घटनाओं को याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि बहुत सारे देव स्थानों पर हम जाना चाहते हैं और कई बार हम सोचते भी नहीं हैं। मैं आदरणीय रेड्डी जी से पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ कि आइए आइए दर्शन करने आइए, लेकिन ये अचानक मुझे एक दिन एयरपोर्ट पर मिलते हैं और आपने कहा कि नहीं मैं 8 तारीख को पक्का आ रहा हूँ इस बार। तो मैं तो सोच रहा था इस बार भी इनका कार्यक्रम टल न जाए, लेकिन मुझे लगता है 2 कारणों से आपने यहाँ पर कार्यक्रम को बिल्कुल निश्चित किया। एक तो बाबा केदार ने आपको बुलाया, दूसरा जो आप पूरे देश के अंदर जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम कर रहे हैं, दूसरा हमारा कला क्षेत्र फाउंडेशन। इन दोनों के कारण से ही जो है आप हम सब के बीच में आए। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। कला इतनी महान, इतनी अद्भुत, इतनी रचनात्मक है कि यह व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए एक महान प्रेरणा बन जाती है। जो ये कथन है, इससे पूरे कार्यक्रम का सार समझ में आ जाता है। जो कार्यक्रम अभी हमारे सामने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कला फाउंडेशन के द्वारा प्रस्तुत होना है, भारतीय कला की अग्रणी रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी को मैं नमन करता हूँ कि उनकी उस प्रेरणा को, जिसके माध्यम से उन्होंने वर्ष 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन की नींव रखी थी, आज एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करते हुए लगातार भरतनाट्यम के क्षेत्र में एक विश्व प्रसिद्ध कार्य सिद्ध कर रहा है। भारतीय संस्कृति मंत्रालय के निर्देशानुसार कला क्षेत्र फाउंडेशन द्वारा संगीत और नृत्य का एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अमृतम गमया का जो शानदार आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, उस हेतु में संपूर्ण कला क्षेत्र के सभी हमारे उनके पदाधिकारियों को, उनके सभी कार्यकर्ताओं को, कला क्षेत्र फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके इस प्रकार के कार्यक्रम अन्य जगह पर भी आयोजित हो रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प किया गया है, उसको साकार करने में कला क्षेत्र फाउंडेशन के ऐसे कार्यक्रम बहुत ही सार्थक होंगे। इस महोत्सव में
भिन्न भिन्न कला प्रेमियों द्वारा जहाँ पर अपना अद्भुत प्रदर्शन किया जाएगा। इस हेतु मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे बीच में आकर इस प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि मैं इसके आमंत्रण पत्र में देख रहा था कि यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तुति ताल इंडिया है। ताल इंडिया शास्त्रीय संगीत में तबले, मृदंग, ढोल और मजीरे आदि का अनुपम व्यवहार के साथ ताल की अहम भूमिका है, जो थोड़ी देर बाद हम सब लोग यहाँ पर उसका प्रदर्शन देखेंगे। मधुर उत्तराखंड के अंतर्गत पहाड़ी फोक म्यूजिक, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, अनुपमा भागवत जी के सितार के साथ लालगुड़ी विजयलक्ष्मी जी के वायलिन का समन्वय, संतूर वादक राहुल शर्मा एवं गुलजार गनी एवं ग्रुप बैंड की कश्मीरियत, स्पेन का फ्लेमेंको, भारतीय कांड भारतम एवं मिस्र का लोकगीत, नृत्य, तनोरा कार्यक्रम हम सभी को यहाँ पर मंत्रमुग्ध करेगा। सच बताऊं तो ये प्रदर्शित होने वाले इन सब कार्यक्रमों से मुझे महाउपनिषद का एक श्लोक याद आ रहा है, जिसमें कहा गया है, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वैसुदैवम तो कुटुंबकम। कि हमारे लिए सारा संसार, जैसा अभी रेड्डी जी कह रहे थे, आज भारत पूरे विश्व को एक संसार मानकर जो हमारी संस्कृति है वो पूरे भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को, पूरे प्राणी मात्र को अपना घर जैसा मानते हैं। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेरा है, ये मेरा है। इस प्रकार की संस्कृति, इस प्रकार की सोच उनके मनों में होती है जिनके मन छोटे होते हैं, जिनके मन विशाल होते हैं, हृदय विशाल होता है। उनके लिए सारा संसार अपना घर है। और उसकी चिंता करते हुए अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी के रूप में हमारे सामने आई, उस महामारी के समय में जब हम लोग सोच रहे थे कि भारत के अंदर अगर ये बीमारी आएगी, ये महामारी आएगी, तो इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, इसका प्रबंधन कैसे होगा। जहाँ पर हमारे छोटे छोटे जैसे उत्सव होते हैं, कोई नामकरण संस्कार होता है, कोई अन्य संस्कार होता है, उसमें भी सैकड़ों लोगों का आना सामान्य घटना होती है। ऐसे समय में जहाँ WHO जैसे संगठन ये सोच रहे थे कि भारत में जब कोरोना की महामारी आएगी तो इसको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा, भारत दूसरे लोगों के लिए बोझ बन जाएगा, पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगी भारत की स्थिति को सुधारना। ऐसे समय में हमारे देश के नेतृत्व में, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से जहां इस बीमारी पर नियंत्रण पाया गया, एक तरह से मैं कहूं कि विजय पाई गई और उसी ठीक तरीके से उसकी व्यवस्था की गई, उसका प्रबंधन किया गया। और जहां हम सोचते थे, आपने देखा होगा, पहले हमने पढ़ा होगा बहुत सारे लोगों में से कि देखा होगा कि जब पोलियो देश के अंदर आया था तो पोलियो की खुराक आने में कई दशकों लग गए, 1.5 दशक से भी ज्यादा समय लग गया, लेकिन पोलियो की खुराक नहीं आ पाई। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुसंधान किया कि 1 साल से भी कम समय में एक वैक्सीन नहीं, 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाने का काम हमारे देश ने किया। और इतना ही नहीं, आज हम जहां 200 करोड़ वैक्सीन की डोजें लगाने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, उसको पार कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे संकट के समय में जब पूरी दुनिया जूझ रही थी, कोई वैक्सीन देने को तैयार नहीं था, ऐसे समय में भी भारत की जो हमारी संस्कृति है, पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानने की उस संस्कृति को आगे बढ़कर हमारे देश ने दूसरे देशों को भी 20 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन देने का काम किया। भाइयों बहनों, तो मैं आज के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, अनेकों कार्यक्रम देश के अंदर संचालित हो रहे हैं, अनेकों कार्यक्रम, हर घर तिरंगा अभियान, आज भारत छोड़ो आंदोलन की, आज ये वर्षगांठ की, आज के इस अवसर पर तमाम जगह पर प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं, बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर भी, उत्तराखंड जहाँ वीर भूमि है, देवभूमि है, इसके साथ साथ ये सैन्य भूमि भी है। यहाँ पर सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान देश के अंदर यहाँ से रहता है।
जितनी हमारी आबादी है उससे कहीं ज़्यादा देश की सीमाओं की रक्षा में हमारे यहाँ के वीर जवान 24 घंटे काम करते हैं। किसी का बेटा सेना में है, किसी की बेटी सेना में है, हर परिवार से कोई न कोई सेना में है। जहाँ देश की आज़ादी का आंदोलन, उसमें भी उत्तराखंड राज्य के तमाम वीर अमर शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, महान हमारे लोगों ने इसमें भाग लिया। वहीं देश की सीमाओं की रक्षा में भी लगातार तत्परत है। ऐसे में हम सब लोग जहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का जो हमने संकल्प लिया है, उस संकल्प के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और ये संकल्प आज सिद्धि की ओर पहुंच रहा है। इसके साथ साथ ये केवल एक भारत सरकार का कार्यक्रम न होकर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि देश की आज़ादी के बाद मैं समझता हूं कि इतना बड़ा तिरंगा का अभियान देश की आज़ादी के बाद पहली बार हो रहा होगा। और आदरणीय रेड्डी जी हमारे उसके पूरे संयोजक हैं। मोदी जी के बिल्कुल उनके एक साथी के रूप में पूरे कार्यक्रम को संचालित करने का काम कर रहे हैं। हमारे 20 लाख परिवारों में ये ध्वज फहरेगा, हमारा झंडा हमारी आन बान शान के रूप में फहरेगा। वहीं जो आने वाले 25 साल आज़ादी का अमृत काल, जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारे बेटे बैठे हैं, जिनकी आयु आज 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, अगले 25 साल इन्हीं के नाम होने वाले हैं। नया भारत बनाने का, एक समृद्ध भारत बनाने का, एक शक्तिशाली भारत बनाने का, एक वैभवशाली, एक गौरवशाली भारत और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनाने की जिम्मेदारी अमृत काल में हमारे इन नौनी हाथों पर है। मैं इन सब का आह्वान करता हूं कि वो सब आगे आए और देशभक्ति का जज्बा लेकर हम सब लोग आगे बढ़े और जो हमने संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को हम सिद्ध करेंगे। और हमारा जैसे आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल देश की आज़ादी के हो गए, उसी प्रकार से अब से ठीक 3 साल बाद हमारे उत्तराखंड की भी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाया जाएगा। 25 साल उत्तराखंड के बने हुए होंगे और इन 25 सालों में हम कितने आगे बढ़े हैं और हम एक संकल्प ले रहे हैं कि हर विभाग, हर स्वयंसेवी संगठन, हमारे विद्यार्थी क्षेत्र के जुड़े हुए, शिक्षा क्षेत्र के जुड़े हुए तमाम हमारे संस्थान, सारे के सारे कोई न कोई एक न एक ऐसा काम करेंगे कि हम कहेंगे कि हम अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, वह भी हम धूमधाम से मनाएंगे। तो मैं आज के अवसर पर पुनः रेड्डी जी का बहुत स्वागत करते हुए, बहुत उनका अभिनंदन करते हुए, पूरे सभी विभाग के लोगों का भी मैं यहाँ पर बहुत धन्यवाद करते हुए और विद्यालय की हमारे विभाग जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत अभिनंदन करते हुए और कला क्षेत्र फाउंडेशन को बहुत साधुवाद देते हुए कि उनके द्वारा यहाँ पर शानदार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हम सबको देखने को मिलेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार और एक अच्छा रास्ता दिखाने का काम करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। Thank you very much for your aesthetic words of appreciation and good wishes. Thank you very much. May I now request our Director, Kalakshetra Foundation, Srimati Revati Ramachandran, to please deliver the thank you note. Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram. Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of independence and the glorious history of its people, culture and achievements. Our beloved Prime Minister has said that this Mahotsav is a festival of awakening of the nation, festival of fulfilling the dream of good governance and the festival of global peace and development. We are very, very happy to bring this Azadi Ka Amrit Mahotsav in the form of Amritam Gamaya, the Ministry of Culture, and we have our minister here with us. We thank him for having supported this cause, and we are very, very glad, Kalakshetra Foundation, to bring this to different cities in India. The third being Dehradun, and I want to, at this moment, offer my sincere gratitude to our minister, Mr. Kishan Reddy ji, for supporting this cause and helping us bring this throughout India. I also have to thank the Honorable CM for having accepted to be here, of Uttarakhand, for having accepted to be here
It is indeed an honor for us, sir, your presence here to encourage the artists. As we have seen, there are more than 100 artists who are going to be performing here on stage. With both, we have international artists as well as artists from India, all over India, both folk and classical, performing together on the same stage. The concept of Amritam Gamaya starts with looking at the heritage, the association with the past that India has, connecting with the people of India through India, and taking it to the succeeding generations. And as part of this movement, we have been also performing at many schools, and we have been spreading the word of Azadi Ka Amrit Mahotsav, of our culture, of the true nature of where we belong to. At this moment, I want to especially thank our Secretary Govind Mohan Ji, who is not here with us, but Ministry of Culture Secretary, who has conceived this thought and who has made us come up with this concept. I want to thank him, and I also have to offer my special thanks to Umananduri Ji, our very beloved Joint Secretary Ji. I wish to honor her at this moment, ma'am. Please, I request our board member, Ms. Anupama Hosekere, who has come all the way from Bengaluru to honor Umaji. We thank her for all the support. Our beloved chairman, Shri S. Ramadurai sir, chairman of Kalakshetra Foundation, who is ex-CEO of Tata TCS, he has been a pillar of support in all our endeavors, and all the board members of Kalakshetra Foundation. We have with us today Anupama Hosekere and Beru Singh Ji, who have come all the way from their respective places to participate in this event here. I thank them for their presence here. I would be failing in my duty if I do not thank our Director of Academies and the current Secretary in charge of Sangeet Natak Academy, Sri Anish Rajan Ji, for his presence and his support in all our endeavors. And today's venue, the Welham School, I have to mention that it was out of the blue that we were able to do it here. And it was because of the total support which I got from Ms. Vibaji. I wish to honor her. Please come to the stage, please. The enormous support that the entire school team has given us in putting up this stage, in getting this premises ready. It is overwhelming, and we thank them, and they have a connection with Kalakshetra Foundation. The alumnus of Kalakshetra Foundation have been teaching in the school Bharatanatyam, and we are very proud to say that we have been associated with them for quite some time now. And I have to also thank all the state government officials who have made today's event possible. The officials who are present here, Mr. Meenakshi Sundaram sir is here. I thank you, sir, for your support. And all the others who have come here, all the important VIPs, guests who have come here, who have taken up our invitation and come here to be present in this festival here today. I also have to thank the artists who have participated in this event, and the entire team from Kalakshetra have been a backbone for me. And I would be failing in my duty if I was not to mention Banyan Tree. Banyan Tree, Mr. Mahesh Babu, I request him to kindly come on to the stage. Mr. Mahesh Babu and Nandini Mahesh have been a great pillar of support for us. I think he's busy. So Mahesh Babu deserves a very big hand. So he's been a pillar, so right from the conceptualization of Amritam Gamaya,
and we had it in Ahmedabad and Bengaluru. They were the one who guided us, and we're very happy to have been associated with them, with Banyan Tree, and in putting this wonderful festival here. And I also want to thank all the schools which have hosted the Jan Bhagidari program of Amritam Gamaya. I want to thank all the public who have supported us, the press, and all of you who are present here. Thanks to one and all of you, and hope you will enjoy Amritam Gamaya today. As our Chief Minister, Honorable Chief Minister has already told, we have a list of items. We are starting with Samanvaya, which is a confluence of the Carnatic and the Hindustani music. This will be followed by the Purliya Chow, and it will be followed by excerpts from Ramayana, which was choreographed by Rukmini Devi Arunde. And then following it, we'll have the Madhur Uttarakhand music, which will be followed by the Kashmiriyat. And then we move on to the Tal India, a beautiful ensemble. Then comes the international artists. Our idea was also to draw parallels with international cultural programs. And so we have the Spanish dancers, the flamenco dancers, and the Tanura Egypt dancers, all put to you together here on stage. I also wish to thank especially Swami Sakshat Kritananda ji, who has made it to come here today from Rishikesh, from Swami Dayananda Saraswati's ashram. Thanks to one and all of you. Thank you so much. Thank you very much, Shaka. More on today's proceedings to Kumari Tejaswini Vijay and Dr. Rakesh Bhatt. They are the co-anchors for this evening. So move on from here. Thank you very much. Pleasant evening to all. Good evening, Dehradun. This is Tejaswini Vijay. Samanvaya. An accomplished violinist, Lalgudi Vijay Lakshmi, is the daughter and disciple of the legendary violinist Sri Lalgudi Jairam. She has enthralled audiences around the world as a soloist, accompanist, as well as in duets with her brother G.J.R. Krishna. She presents Samanvaya along with Anupama Bhagavat, a versatile sitar player whose playing style is especially characterized by scintillating fast dance, mastery of the meditative ala, and a brilliant fluency of melody, all while remaining true to tradition. Accompanying them this evening are Sai Giridhar on the mridangam and Anugrata Chatterjee on the tabla. Presenting to you, Samanvaya. Namaste to all. On behalf of the artists on the dais, we would like to convey our sincere thanks to the Banyan Tree, Kalakshetra Foundation and the Ministry of Culture for such a great event, bringing all the cultures together and arts together. Indeed, it's a great privilege to perform here. We will start with an invocation by Swami Tejomayananda in Yaman, the North Indian style, and Kalyani in the Carnatic system, followed by Kiravani.
indeed magical, wasn't it, when all the musical instruments came together? I now request Srimati Kavya Kishan Reddy ma'am to please felicitate the artists. Thank you so much, ma'am. नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या वंदन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस सांस्कृतिक अनुष्ठान में एक बार पुनः मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा। कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद श्रीमान जी कृष्णा रेड्डी जी, माननीय संस्कृति मंत्री भारत सरकार, श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, श्रीमती उमा नदूरी जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, श्री अनीश राजन, अकादमी निदेशक संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, श्रीमती रेवती रामचंद्रन, निदेशक कला क्षेत्र फाउंडेशन, आप सभी उपस्थित विशिष्ट जन, कला प्रेमियों और देवभूमि वासियों। महादेवी वर्मा की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि बीन का वादक भले ही छूट कर डोले न डोले, अश्रु के अक्षर चढ़ेंगे, वंदना होती रहेगी। देवभूमि के लोगों का ये हमेशा से परिचय रहा है कि उन्होंने स्वागत उद्बोधन बहुत गर्मजोशी के साथ में किया है। आपकी तालियों का महोत्सव इस बात का परिचय दे कि आप वास्तव में स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं देश भर के और विदेश भर से आए हुए इन कलाकारों का। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस विशिष्ट व वैभवशाली आयोजन, जिसे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, इस कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करते हुए मुझे गौरव का एहसास हो रहा है। यह उत्सव स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का देशव्यापी उत्सव है और इस उत्सव का हिस्सा बनना हम सबके लिए एक सौभाग्य की बात है। भारत स्वयं में ही एक ऐसा राष्ट्र है जो उन गिने चुने राष्ट्रों में एक है जिसने आज की इस 21वीं सदी में भी अपनी प्राचीन संस्कृति की विरासत को जीवित बनाए हुए रखा है और जिस विरासत पर हम गर्व कर सकते हैं। भारत एक राष्ट्र नहीं, संस्कृतियों का पुंज है। इस मंच पर संस्कृतियों के इस पुंज के दर्शन हम आपसे करवाना चाहते हैं। कार्यक्रम का जो अगला हिस्सा है वो पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छाव नृत्य है, जो हमारे विशेष कलाकार इस मंच पर अब उपस्थित हो रहे हैं। आप सब जानते हैं कि छाव 3 प्रकार से विश्वविख्यात है, जिसमें मयूरभंज, सरायकेला और पुरुलिया छाव। पुरुलिया जो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है पश्चिम बंगाल का। इस कला को वहां के इन कलावंतों ने बहुत शिद्दत के साथ में, बहुत संवेदनाओं के साथ में और बहुत बड़ी सांस्कृतिक चेतनाओं के साथ में संरक्षण और संवर्धन किया है। पुरुलिया छाव जो अर्थ देता है इस बात का कि वो शिव के उपासक हैं, अर्थ देता है इस बात का कि वो श्रेष्ठ कलावंत हैं। पश्चिम बंगाल का जब हम जिक्र करते हैं तो वहां के सांस्कृतिक लोक कलाओं का स्वतः ही उल्लेख होता है। भारतीय संस्कृतियों में पश्चिम बंगाल एक सिरमौर क्षेत्र कहा जा सकता है, जो वहां की इस कला को संरक्षित कर रहा है, संरक्षण कर रहा है। कार्यक्रम में पधारे आप सभी कला प्रेमियों का स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं इन कलाकारों को मंच पर निमंत्रण दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि कलाकार मंच पर उपस्थित होंगे और
ये जो प्रस्तुति पुरुलिया छाव अब हम यहाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, उसकी शुरुआत हो, उसका प्रारंभिकरण हो, जिसमें मैं कलाकारों का परिचय आपके बीच में रखना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि मंच का प्रकाश प्रदीप्त हो ताकि हम कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें। पुरुलिया छाव के कलाकार मंच पर आएंगे। उन्हें इस बात को दोहराने में मुझे बहुत ही गर्व का एहसास है कि आजादी के अमृत महोत्सव में जो सांस्कृतिक आयोजन आज हम इस मंच पर आप सबके लेकर के आए हैं, ये इस शहर के लिए, इस देवभूमि के लिए एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम था। बहुत गौरव करने वाला, बहुत फक्र करने वाला कार्यक्रम है। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि इन दिनों हम आजादी के इस अमृत महोत्सव में रंगमय हैं, संस्कृतिमय हैं। संस्कृतियों की श्रृंखला को हम बहुत से विभिन्न रूपों में इस मंच पर लेकर के आए हैं, जिसमें ये पहला जो सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण है वो पुरुलिया छाव है। कलाकार मंच पर आ रहे हैं।